Saira, let us start. जी बिल्कुल. So Assalamu alaikum everybody. We'll be starting today's session. Introduction will be given by our council member Mr. Farooq Rahman. Farooq Saab, please, over to you. Thank you, Saira. Assalamu alaikum, dear fellow chartered accountants. Today we are having our first seminar or webinar. This is in connection with the AML framework that ICAP has issued. You must be hearing a lot of media and discussion around FATF in Pakistan. So it's been about 2 years when this FATF term came, and we all started listening to this. FATF is Financial Action Task Force, and I will giving you a background to this and linking it to why this is relevant to us. Relevant to us means to Pakistan as well as to our institute. So FATF, Financial Action Task Force, this was formed in 1989. This was formed at the G7 summit, and since then they have issued recommendations, and their task is to it's a policy making body which has given international standards on combating the terrorist financing and money laundering. In 1990, they issued their first set of recommendations. The 40 recommendations were issued in 1990. And after a couple of updates, the latest recommendation that we have for today, that is 2012 recommendations. So presently, the international standard that we follow from FATF is of 2012. There are 39 members as at present of this Financial Action Task Force. This is an intergovernmental organization. There is no separate set of agreement kind of a thing, but this is a task force combining these 39 countries. Then there are 9 associates. One of the associates is Asia Pacific Group, and Pakistan is a member of that Asia Pacific Group. So this is the link from FATF to Asia Pacific Group. In the Asia Pacific Group, there are 41 members. Again, it's an intergovernmental organization. Asia Pacific Group mainly, apart from some training and seminars and other aspects, but they're one of the main tasks to have. Suhail, please. सुहेल आप टेक ओवर करें. जी फरूक साहब का शायद कुछ टेक्नोलॉजी का इशू हो रहा है, तो वो रीजॉइन कर रहे होंगे. मैं थोड़ा सा फर्दर जब तक फरूक साहब ज्वाइन करते हैं तो एशिया पैसिफिक ग्रुप और उसकी रेलेवेंस टू पाकिस्तान AML रेजीम एक्सप्लेन कर देता हूँ. एशिया पैसिफिक ग्रुप जैसे फरूक साहब बता रहे थे कि इज पार्ट ऑफ FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और ये रीजनल बॉडी है जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है. जो हमारी पाकिस्तान की म्यूचुअल इवैल्यूएशन होती है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन का ये मतलब है कि जो पाकिस्तान की AML रिजीम का रिव्यू होता है इंडिपेंडेंटली, वो APG एशिया पैसिफिक ग्रुप करता है, और जिसका हमने बहुत तज़किरा भी सुना होगा, और जो रिपोर्ट फिर FATF को सबमिट होती है और वो उसके ऊपर डिसाइड करता है whether to retain a country in a particular list, और किस किस की सैंक्शंस हो सकती हैं वगैरह वगैरह. So APG is a direct forum जिसपे पाकिस्तान का रोल है, और जिसमें पाकिस्तान की असेसमेंट इम्पोर्टेंटली होती है जो हाल ही में हुई है, और जिस पे MER या म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट इशू की गई है, वो एशिया पैसिफिक ग्रुप की टीम होती है, which is basically फिर
वही रिपोर्ट फर्दर फिर APG FATF को सबमिट करता है और फाइनल डिसीजन FATF का होता है। तो ये joined. जी प्लीज, मैंने बस APG के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है और उसकी रेलेवेंस टू पाकिस्तान AML रीजन। जी प्लीज फरूख सर। Okay, so Asia Pacific Group has 41 members. I've explained, and they have issued this mutual evaluation report 2019. In that report, based on their assessment and evaluation, there are a number of non-compliant matters with reference to the 40 recommendations. There is one very specific recommendation that deals with the regulation and supervision of designated non-financial businesses and professions. When we look at the evaluation, they have given Pakistan a non-compliant status. A non-compliant status for a country specific in relation to a particular recommendation or as a whole, the non-compliant status takes you to some panel actions or panel issues that in terms of their सजेस्ट कि हम थोड़ा सा वेट कर लें, मे बी फरूख साहब रीजॉइन कर लें। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एवरीवन, सॉरी। Because of this non-compliant status of Pakistan, so because of this non-compliance status, this has become a national issue, and the government of Pakistan has taken a number of measures to rectify the situation. So the specific recommendation on the designated non-financial businesses and professions, there are 4 such sectors where this very specific recommendation talks about. One is the jewelry, the jeweler sector. Then we have real estate, lawyers, and the accountants. So that's the link where we as accountants fall under the designated non-financial businesses and profession, and there are specific recommendation, and the status as of now is Pakistan is non-compliant. In terms of making these recommendations and making it obligatory in Pakistan, one of the Pakistan government introduced an AML Act. This was introduced in 2010. So it's called Anti-Money Laundering Act 2010. And this came out principally because of a past mutual evaluation. This was conducted by the World Bank. So under this AML Act, principally, they have explained what is money laundering, and they have given definitions and have other provisions. With this current non-compliant status on the designated non-financial businesses, as well as other issues identified in the mutual evaluation report, this AML Act is being looked at, and there will be amendments. Saira will be talking more about this. So for us, as we speak, this is the Anti-Money Laundering Act, which is the law of the land that makes obligatory on us to follow the requirements. In this, again, the designated non-financial businesses and professions are defined. Accountant is part of it, and there is a concept of reporting entity. Principally, this AML Act says if there are proceeds of crime, then this falls under this act, and accordingly, this becomes a criminal act and accordingly prosecuted.
So in terms of obligating on us under this act, the government of Pakistan, and this is coming out of the FATF recommendation that there has to be for these sectors there has to be some supervisors. So the government of Pakistan has notified our institute as the SRB for our profession. They have also notified ICMA as SRB for their members. Also, in terms of the FATF recommendations, there is a requirement to have a supervisor over the SRB, which in our case they have notified. The government of Pakistan has notified SCP. So we taking guidance from this notification of SRB under the AML Act. There are 3 forums. Principally, the top forum is the National Executive Committee, which is chaired by the Finance Minister of Pakistan, and there are other ministers. Then this National Executive Committee is supported by a general committee, which is headed by the finance secretary, and there are other members as well. But the operating day-to-day activities are to be carried out and authorized under this act is the financial management, financial monitoring unit. This is at present, I understand, is housed in the State Bank of Pakistan, and the FMU has issued, they have under the AML Act has issued some guidance in terms of the framework to be issued by ICAP. So we have issued the framework in terms of this notification coming from FMU, and our AML framework then accordingly takes into account the recommendations and obligations that FATF recommendation put us for designated non-financial businesses and professions. When we move forward, Sohail will be giving you a brief on this AML framework, and we will have a Q&A after Sohail's presentation, and you will have the opportunity to ask questions. So this is a real brief background where what FATF is linking to Asia Pacific Group, where Pakistan is a member, and then coming into AML Act. And under the AML Act, it is the framework that we have, that's the link there where we as institute have issued the framework, putting requirements for the reporting firms. And there are specific criteria for who are the reporting firms that Sohail will be covering in its presentation. So with that, let me request Masood Akhtar Saab, if you can just give a perspective from the institute side. Thank you. Yes, Assalamu alaikum everybody. I'm Masood Akhtar, Secretary ICAP. And as Farusa was telling you about the broader outlook, what is FATF and how it came into being, and what are its objectives. So as Farusa told you that the government of Pakistan has nominated us, the ICAP, as the self-regulatory body for this purpose of the AML Act. And I would just be telling you that what would be our role and how we would coordinate with you. So first of all, we have set up a AML department in the ICAP, and that department would be reporting to a board which has been formed under the framework, which as you all know, we have issued in March, that framework, and that covers that how the institute will monitor the overall will monitor the situation as a SRB. So under that framework, a board has been set up. The chairman of that board is Mr. Hussain Basrai, who is our past president. Then we have 2 other members of that board who are chartered accountants. Then we have
2 nominations, one from the SCCP and the FMU. So now this is the scenario, the supervision, the board is there, then the department is there. Most of the time the department would be communicating with you and the department would be supervised by the board. So now as far as the firms are concerned, we have recently issued a communication to all the practicing firms, and we have requested them to nominate their contact persons so that they can be contacted with regard to this AML issues, whatever the AML matters are and whatever we need to communicate with regard to AML, we would be communicating that to the contact persons. And somehow many firms have not yet, given the names of their contact persons. So I would request all the firms to please give the names of their contact persons, because that is very important. And that would require, otherwise it would be very difficult for us to communicate with the firms, and they would become they might become what we can call जिसे कहते हैं ना कि वो compliant नहीं रहेंगे, they can become non-compliant. So first of all, I would request all the firms to send their names for the contact persons, and then we have just recently those firms who have issued their names of the contact persons. We have issued a national risk assessment report to them, and that is for the purpose of determining how to go about and assess their risk. So that we have done so far. Then with regard to further communications, we will be having, we will be having a portal, and the framework which we have issued that contains 2 forms which the firms would be required to fill. First form is Form A, and that would be required to be filled by every firm. Every firm will fill that Form A, and on the basis of information provided in that form, we will ascertain, or the department or the board will ascertain that which firms are are involved in activities which come under the domain of the AML Act, and which firms are not involved in such activities. So those firms who are involved in the activities which come into under the domain of the Act, they would be required to fill Form B, after which the necessary procedure for their monitoring would start. So for that purpose, for the purpose of this communication, we are setting up a portal so that it's a hassle-free sort of a process which you can use for communicating with ICAP and using the technology. Then there's a ICAP web, and there's a dedicated AML web page on the ICAP website, and that contains relevant articles, publications, and different tools relating to the AML that are there for your guidance and for your for the firms to see and understand what they have to do. And today's session is the first awareness session. We will be holding such sessions in the future, so that we brief you on the latest developments, and we will try to guide you and provide you as much information as may be necessary. And this will also these webinars will also help us to develop FAQs. So I would just request all of you to please participate in this when the when the participation opens. So please do participate with your questions, and so that we are able to really know what your issues are. So now I would request Sohail to take over and inform you about the framework and the AML Act. Mustafa, first Saira, and then Sohail. I'm sorry. First, I'll ask Saira to further brief you on the issue. Assalamu alaikum, everybody. I've seen on the chat that there's a request कि उर्दू में बात करी जाए, तो चलें मैं आप लोगों के लिए खास तौर पे इधर उर्दू से शुरू करते हैं यहाँ पे. जैसे अभी फारूक साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड वर्किंग ग्रुप्स एज वेल एज कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर बहुत सारा काम हो रहा है. DNFBP सेक्टर के अंदर हमारे दूसरे रेगुलेटर्स के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, SCCP है, स्टेट बैंक है, और पाकिस्तान बिजनेस बार काउंसिल है,
और representatives of real estate और gems and jewelers भी हैं. So इन लोगों के साथ multiple sessions हो रहे हैं जिसके अंदर एक दो चीजें जो prominently हुई हैं. एक है AML Act, that is Anti Money Laundering Act के अंदर amendments हो रही हैं ताकि ये जितनी भी आपकी ये पूरी framework और ये जो पूरी regime है AML की वो उसके अंडर कवर हो. So that is in process. उसके अलावा risk based framework के ऊपर काम हो रहा है because आपकी methodology जो है for AML is supposed to be based on risk based assessment. तो उसके जो आपका जो ये फॉर्म AN फॉर्म भी है ये एक रिस्क मैट्रिक से लिंक अप होगा. तो we are working on that along with the consultants. They are guiding us about how to go about this. They are also helping out in making a training program तो जिसके लिए फिर webinar videos वगैरह भी बनेंगे and other learning material will be also available. So we are like meeting on a very regular basis. आप सोच सकते हैं कि sometimes we have like meetings with the consultants twice a week. So it's a very active project because ये national priority list पे है government के. So this was a little brief about what's happening with the consultants of the government. So now I'll like request Suhail Saab to take over, and Suhail is going to then explain you about our entire AML program, etc. Over to you, Suhail. Assalamu alaikum and thank you, Saira. Saira थोड़ा सा AML Act के बारे में हमें explain कर रही थी और role of the consultants and role of the government. मैं इसको थोड़ा सा और clarify कर देता हूँ. The consultants have been involved by the government of Pakistan, and the government of Pakistan is working with various institutes and sectors. For example, it's working with accountancy side पे ICAP के साथ और बाकी institutes जो पाकिस्तान में हैं जैसे ICMP उनके साथ. इसी तरह SCCP involved है. इसी तरह Pakistan Bar Council from the lawyers side. So various bodies and institutes are involved और वो government of Pakistan के साथ involved हैं. Government of Pakistan का मतलब यहाँ पे ये होगा कि Ministry of Finance and then Ministry of Finance के अंदर जो है predominantly financial monitoring unit जो है पाकिस्तान में जो एक बॉडी है और जो AML Act के तहत एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है. तो ये प्लीज जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज हल्की आ रही है. अब इज इट बेटर? आई एम सॉरी. ये सही है सुहेल, अब इस तरह सही है जी. तो जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. ICAP भी गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है और ICAP इसी सिलसिले में on the directions of the government जो है वो अपने एरिया से रिलेटेड कंसल्टेंट्स के साथ भी इन्वॉल्व है. तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था कि कंसल्टेंट्स आर अपॉइंटेड या हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. AML एक्ट के ऊपर जो चेंजेस हैं अगर मैं थोड़ा रिजीम को एक्सप्लेन फर्दर कर सकूं तो AML एक्ट है इज अ बेसिक लीगल इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान में है. उसकी इम्प्रूवमेंट या उसकी जो इन्हांसमेंट हो रही है सो दैट इट इज नाउ जो AML regime है as far as the legal structure is concerned वो compliant हो with the APG के जो अंदर हमें deficiencies नजर आई हैं रिपोर्ट में उसको fulfill किया जा रहा है या meet किया जा रहा है. AML Act के तहत ही जैसे फरूख साहब एक्सप्लेन के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को रोल दिया गया और अकाउंटेंसी साइड पे ICAP has been appointed as SRB. उसी सिलसिले में जो AML Act है उसी के तहत ICAP को जब SRB नॉमिनेट किया गया या डेजिग्नेट किया गया तो ICAP's now role is to issue a framework which is it has. well आवाज थोड़ी फिर वो हो गई, थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे जी. तो AML एक्ट के तहत ही जो फ्रेमवर्क इशू किया गया है और इसी तरह एक और पैरेलल साइड पे जो AML का सुपरवाइजर होगा फॉर अकाउंटेंसी सेक्टर ICAP और ICMP के लिए वो एक रेगुलेशंस इशू करेगा जो कि अंडर प्रोसेस हैं और वो SCCP जिसके तहत एम्पावर्ड होगा टू इन अ वे जिसको कह सकते हैं मॉनिटर ICAP's AML सुपरवाइजरी जो फ्रेमवर्क की रिजीम है. आई विल एक्सप्लेन दैट इन फर्दर डिटेल जब हम मैं प्रेजेंटेशन में उसको एक्सप्लेन करूंगा. सो दिस इज बेसिकली जो अभी तक का डेवलपमेंट्स हैं. इसमें इम्पोर्टेंटली ये है कि द नेक्स्ट जो इवेल्युएशन होगी उससे पहले पाकिस्तान ने अपनी कंप्लायंस स्टेटस सबमिट करना होगा टू APG बिफोर द म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट.
एंड उसी वजह से इस पे काफ़ी एक्टिवली काम हो रहा है एंड एक्सपेक्टेड ये है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर दोबारा जो है पाकिस्तान की असेसमेंट की जा रही होगी, और उससे पहले जो लीगल स्ट्रक्चर है एज वेल एज द जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो सेटअप करना और उसकी इफेक्टिवनेस को भी देखना होगा. So that's why we are working, institute is working aggressively on this project, AML के ऊपर. Now I will be sharing a brief presentation जिसमें आज का जो सेशन है predominantly वो हम फोकस कर रहे होंगे on ICAP's AML framework. So वो हम डिस्कस करेंगे and I will specifically highlight the obligations of the firms under the AML framework. So I would be starting with the presentation. I hope all of I hope हम सब स्क्रीन को देख सकते हैं. तो this is basically the screen is visible. Screen visible. जी. The presentation is basically जो है वो ICAP AML framework है with more focus on the obligations of the reporting firms. We would be covering a brief of the scope of the AML regime in Pakistan, then the FATF recommendations. Farooq Sahab introduced the FATF recommendations. I will be touching upon the FATF recommendations in context of our members, जो institute की practicing firms हैं, उनके context में AML FATF recommendations में कौन सी relevant हैं. Then the ICAP's AML framework, basically वो क्या cover करता है, and the thirds of the presentation would be about the obligations of reporting firms which are coming out of the AML framework. And lastly, I will touch upon the AML supervisory framework, which has also been set out or prescribed in the framework that has been issued on 29th of Feb. To begin with, the scope of AML, जैसे हम AML Act की बात कर रहे हैं, तो AML Act जो है, अगर हम किसी भी मुल्क का AML का जो कानून है वो has to be based on the FATF recommendations because those are the globally recognized standards. तो लीगल जो कवरेज है वो तमाम चीज़ों की उसको AML Act में प्रोवाइड करना पड़ता है. AML Act जो है अगर देखा जाए तो ब्रॉडली दो टाइप्स ऑफ बॉडीज कह लें, दो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोफेशंस कह लें जिनके ऊपर अप्लाई होता है. वन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी होगी एंड सेकंड इज अ DNFBPs. So DNFBPs are designated non-financial businesses and professions. जहाँ तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये बैंक्स हो सकते हैं, NBFCs हो सकते हैं. So they have a separate AML Act की regime होगी. अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के लिए फिर AML का सुपरवाइजर would be the State Bank of Pakistan. NBFCs का AML सुपरवाइजर anti-money laundering की context में would be SECP. Coming towards the designated non-financial business and professions which we relate, there are many जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, and because of specific AML और CFT exposure उनको हाईलाइट किया है FATF ने अपनी रिकमेंडेशंस में, और उनको ये ज़रूरी है कि उनके सिलसिले में एक AML regime हो जो कि उनके रिस्क को मिटिगेट और कवर करे. So designated non-financial businesses and professions हैं, उसमें accountants हैं, trust and service providers हैं. I will explain कि ये दो categories क्या हैं. Then other जो professions या businesses हो सकते हैं वो general engineers हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे transactions ऐसी होती हैं कि जो exposure ले सकती हैं AML का, money laundering का. इसी तरह lawyers हैं, and the other category is the real estate agents. So these are the categories जो कि हमारे AML Act में भी covered हैं और वो based on the FATF recommendations है. Now narrowing down this to our profession, accountancy profession, तो हमारे दो तरह की जो roles हैं, accountant and trust and service company service provider. ये वो कैटेगरीज हैं जो कि हमारी प्रैक्टिसिंग फर्म से रिलेट करती हैं. दैट्स व्हाई जो पूरा AML का regime है और जो ICAP का रोल है और सिलसिले में जो फ्रेमवर्क इशू किया गया है वो इन दो कैटेगरीज की वजह से किया गया है या उनको कवर किया गया है. अकाउंटेंट की जो कैटेगरी है या उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो FATF रिकमेंडेशंस में है, इसी तरह ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर की भी है. नाउ
these two would also be brought into the AML Act. वहाँ पे भी इनको explain किया जा रहा होगा. However, we have explained this in our framework, and this is basically on the basis of the FATF recommendations के अंदर उनकी definition ये explanation दी गई है. So accountant की general जो understanding है वो यहाँ पे नहीं है. General understanding accountant की यानी वो as a bookkeeper या उस side पे होती है. On the industry side है. Here the role is here the role involves when a firm or a sole proprietor is involved, for example in real estate deals of clients, या client monies को handle करना या clients के assets को handle करना, तो ये role जब कोई भी practicing firm लेती है तो वो accountant की जो definition explanation of services है उसमें fall करती है. डिटेल जो है वो AML फ्रेमवर्क के अंदर है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ. ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर में जनरली जो हम सर्विसेज दे रहे होते हैं टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स फॉर रजिस्ट्रेशन विद SCCP, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन या उनकी इंकॉर्पोरेशन कर रहे होते हैं. इसी तरह अगर हम किसी एंटिटी को एज अपना रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफर करते हैं फॉर देयर रजिस्ट्रेशन, तो इस तरह की सर्विसेज. सिमिलरली अगर एज अ नॉमिनी डायरेक्टर और एज अ डायरेक्टर या उस कैपेसिटी में वी ऑफर आवर सर्विसेज, तो वो भी इसके अंदर फॉल करती है. सो दीज आर टू जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कि जहाँ पे हम स्कोप इन होते हैं, यानी हम का मतलब हमारी फर्म्स. इम्पोर्टेंटली जब हम इस डिस्टिंक्शन को देखते हैं तो वो मेंबर्स हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, those will not be under the AML scope जो कि हमारा AML framework के context में है. So AML framework would be focused on the firms who are providing these services. जो industry में members हैं, those would be covered by the respective जो उनकी अपनी organizations होंगी उनकी AML को regime में. So for example, if an individual is working in a financial institution, so उसके ऊपर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की AML regime है और जो भी उनका इन हाउस जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं. तो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ फर्म्स देखें तो रफली देयर आर अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस फर्म्स जो कि ICAP के साथ रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से कुछ फर्म्स ऐसी भी होंगी जो अकाउंटेंट एंड ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज इस वक्त जब AML फ्रेमवर्क आया तो उस वक्त ऑफर नहीं कर रही होंगी, आज के दिन भी नहीं कर रही होंगी. So those would be not the reporting firms. Reporting firms वो होंगी सिर्फ in context of the AML framework who are providing these services at a particular point in time. जो कि AML जब framework issue हुआ उस वक्त उनके पास कोई existing portfolio है या subsequent to that वो reporting firms बन सकती हैं. So this is the overall जो हमारा AML का framework है based on the AML Act, and then now is linking it with the AML framework that institute issued. इस तरह ये develop होता है. Going forward, जो FATF recommendations हैं, FATF recommendations जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, global recognized standards हैं to combat money laundering और terrorist financing, और इनकी implementation assess की जाती है. and based on that implementation, जैसे पाकिस्तान को इस वक्त हमें मालूम है कि ग्रे लिस्ट में है, और इसी तरह कुछ और कंट्रीज होते हैं जिनको हाई रिस्क किया जाता है या किसी को बिल्कुल सैंक्शन कर दिया जाता है. सो बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट एंड द बेंचमार्क इज अ FATF रिकमेंडेशन जिसके तहत किसी भी मुल्क की एनुअल म्यूचुअल इवैल्यूएशन होती है. पाकिस्तान म्यूचुअल इवैल्यूएशन वाज रिसेंटली डन, उसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल है ऑन FATF वेबसाइट अक्टूबर में, और उसमें हर FATF रिकमेंडेशन के ऊपर पाकिस्तान का कंप्लायंस स्टेटस असेस करके डॉक्यूमेंट किया गया है. इम्पोर्टेंटली FATF रिकमेंडेशंस 40 जैसे हैं, तो उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस हैं व्हिच आर स्पेसिफिक टू द DNFPPs. सो DNFPPs में क्योंकि अकाउंटेंट्स एंड ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं तो उनसे रिलेट करती हैं. सो इसको अगर हम इस तरह कहें कि जो हमारी फर्म्स हैं प्रैक्टिसिंग फर्म्स, उनसे रिलेटेड भी कुछ स्पेसिफिक FATF रिकमेंडेशंस हैं, और उन FATF रिकमेंडेशंस के तहत ही फिर जो भी हमारे मुल्क का AML रिजीम है वो उसको कवर कर रहा होगा और उसकी कंप्लायंस इंश्योर कर रहा होगा. अगर हम FATF रिकमेंडेशंस को देखें तो उसमें रिकमेंडेशन 1 इज जनरल रिकमेंडेशन व्हिच रिक्वायर्स कि AML रिजीम होनी चाहिए, उसके अंदर रिस्क असेसमेंट और AML प्रोग्राम होना चाहिए. ये कंट्री लेवल से बॉटम तक जाता है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अंडर द AML Act or at the highest level
at the country level. So this there should be a regime जो कि इन चीजों को cover कर रही हो. The other two important recommendations जो कि directly relevant हैं are recommendation 22 and recommendation 23. 22 requires the customer due diligence होनी चाहिए, और customer due diligence के context में this recommendation refers to some other recommendations which have been listed now on this slide. जिसमें recommendation 10 है, 11, 12, 15, 17 which we discuss different aspects of customer due diligence या CDD. And then the recommendation 23 जो कि other measures से deal करती है, जिसमें if there are foreign branches तो उसको कैसे handle करना है, internal controls का क्या system होना चाहिए, high risk countries का क्या है concept, and then the reporting requirements which involve STR, suspicious transaction reporting, as well as the highlighting the fact that tipping off is a offense or it's prohibited under the FATF recommendation, and accordingly it's also prohibited barred in the AML Act. It's an offense under the AML Act. ये FATF recommendations वो हैं जो कि deal करती हैं. And then important जो point इसमें ये है कि जैसे फरूख साहब ने शुरू में highlight किया, the mutual evaluation report जो पाकिस्तान की हुई और जिसमें मुख्तलिफ recommendations को assess किया गया, unfortunately जो DNFPP से related recommendations हैं पाकिस्तान को उसमें non-compliant highlight किया गया है. So that's why we are working on ensuring that next time जो evaluation हो और assessment हो, we are compliant by that time. Now coming to the main जो हमारा AML framework है जो institute ने issue किया, और फिर उसके अंदर फिर जो reporting firm की obligations हैं. ICAP का जो AML framework है, क्योंकि ICAP को AML Act के तहत designate किया गया है, तो हमारा framework भी लीगली उसी के तहत AML Act के अंदर issue किया गया है. AML जो framework है अगर आप देखेंगे तो 3 areas में हम उसको divide कर सकते हैं. One जो है वो scope of the AML framework कि ये क्या है, जो कि मैंने शुरू में explain किया कि ये accountants और trusted company service provider किस से related जो services हैं वो उसमें cover हैं, और वो उसमें explain भी हैं कि वो क्या होती है. So ये scope of AML framework है. Then the obligations of the reporting firms, जो scoped in firms हैं उनको हम reporting firms कहते हैं, क्योंकि AML Act reporting entity का concept देता है. तो reporting firms की क्या obligations हैं under the framework. And lastly जो ICAP का supervisory framework है वो क्या है, और उसको पूरा list down किया गया है कि उसमें जैसे शुरू में बताया गया कि AML supervisory board, department, then annual review, preparation of the report, etc. So वो areas cover किए गए. जो focus होगा in the coming slide will be on the obligation of the reporting firms. So one by one हम उसको इसमें highlight कर दूंगा. This is a snapshot कह सकते हैं obligations of the reporting firms को अगर देखें. So it starts with the risk assessment which should be documented. ये तमाम को areas को मैं in coming slides further explain करूँगा, लेकिन it's a snapshot. Based on that, we will be establishing our internal policies. The firms will be establishing their internal policies, their procedures and controls. उन्हीं procedures and controls को then implement किया जाएगा when new customer is coming in. तो उसकी onboarding से related जो भी policies होंगी वो apply की जा रही होंगी. So that's in the identification and verification of customer, उनके agents, representatives होते हैं, beneficial owners. Then there could be requirement for enhanced due diligence. So that would be also that could be required under the AML framework. Further, an important requirement or obligation of the firms is to screen the clients. Screen the clients would be explained in detail. However, it relates to continuous screening of clients whenever there is a notification or SR issued by the government of Pakistan, which highlights a particular individual or entity as a prescribed designated person. So उस सिलसिले में हमें screening की requirement है, which is basically under the FATF recommendations, also under the AML Act, और हमें accordingly अपने AML framework के through firms को भी prescribe की है. As an outcome, जो भी होगा, we would be either maintaining a relationship with a client, or in certain cases we might be required to decline the business relationship, and also consider filing a SPR जो है with the FMU, Financial Monitoring Unit के साथ, in case there are
the results of all this process, all this due diligence is that the customer or the client is prone to जो money laundering or your own areas में है, so then we have to file an STR. And lastly, the important aspect is पूरी regime जो customer की due diligence है उसको ongoingly monitor करना ज़रूरी होता है, and जो record keeping की requirement है वो भी AML framework के अंदर prescribed है, obligation है of the firms to ensure that all the जो risk assessment, AML policies as well as the customer diligence, the SPR, all this is properly documented and made available when required. This is a snapshot. Now moving towards the first part, which is the risk assessment. So basically risk assessments, क्योंकि जो भी regime है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो regime है वो risk based है. That's why national risk assessment जो कि country level पे होती है और जिसमें मुख्तलिफ जो professions हैं और जो businesses हैं उनका risk assess किया गया है, और इसी तरह accountancy sector का भी किया गया है. So that's risk assessment की initiate वहाँ से होती है चीज़, and then at the firm level तक ले जाएगी. So at the firm level हमें NRA को सामने रखना होगा कि वहाँ पे accountancy sector के क्या risk है. इसी तरह हमें जो AML supervisor अगर SCP या institute as AML supervisor डायरेक्टली जो है फर्म्स का कुछ प्रिस्क्राइब करता है या गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो उस असेसमेंट को भी in terms of certain services देखना होगा while developing our firms जो रिस्क असेसमेंट है. रिस्क असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जो AML की regime है कहीं भी वो रिस्क बेस्ड अप्रोच पे है. So higher the risk, the more extensive the work would be required. और इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स में करें तो किसी भी फर्म की अगर नेचर ऑफ सर्विसेज ऐसी हैं या उसका साइज ऐसा है या कॉम्प्लेक्सिटी एज पर इट्स ओन असेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो रिलेटिवली लेसर होंगे कंपेयर टू फर्म व्हिच इज प्रोवाइडिंग extensive or complex services जो accountants personal service company providers से related है. So identify the money laundering risk faced by different areas of your business and the clients and markets you serve. इसका मतलब ये है कि जो risk है वो client से related हो सकता है, वो geographical area से related भी हो सकता है, वो type of service से related भी हो सकता है, या वो delivery channels से related भी हो सकता है. So we have to identify a particular क्लाइंट से रिलेटेड जो हमारा बिजनेस रिलेशनशिप है उनको इन डिफरेंट एरियाज में देखने की जरूरत होगी. सो फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स की अगर बात करें एग्जांपल, तो रिस्क क्या हो सकता है कि मे बी अ क्लाइंट इज अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, सो उसका रिस्क वुड बी डिफरेंट कंपेयर टू क्लाइंट व्हिच इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल. तो एक ही एग्जांपल हो सकती है. इसी तरह अगर हम डिलीवरी चैनल्स की बात करें तो फेस टू इंटरेक्शंस हैं compared to online interactions with the clients, जहाँ पे client is residing outside the country and instructing us to perform certain services. तो इन दोनों का risk relatively different होगा. So identification of these risks is the first part. Then assessment of these risks कि इन risk की basis पे likelihood of occurring ML या CFT क्या है वो होगा, which can be categorized किसी तरह भी categorize किया जा सकता है, likelihood less than यानी likelihood इस तरह करके, या significant, less than significant, moderate, low. So any sort of assessment can be formed और उसको risk categorize किया जा सकता है, and the outcome of all this would be कि उस risk से related policies and procedures develop की जा रही होंगी, controls establish किए जा रहे होंगे और उनको फिर review किया जा रहा होगा. So risk assessment का जो context जो मतलब है और जो process है या steps है वो involved है, उसका outcome would be in the form of जो AML प्रोग्राम है और AML प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट. रिस्क असेसमेंट का दूसरा पार्ट इज AML प्रोग्राम. जो AML प्रोग्राम है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आवर regime है एट द फर्म लेवल. सो AML की जो रिक्वायरमेंट्स कवर करने की जरूरत है इन द प्रोग्राम, वो हमारी रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट कि हम कैसे रिस्क असेस और मैनेज करते हैं. उस सिलसिले में कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग जो STR या करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTRs, उस सिलसिले में एम्प्लॉय हायरिंग एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग से रिलेटेड AML के कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉलिसीज हैं, और लास्टली कंप्लायंस मैनेजमेंट मींस कि whether there is so much work is being done on these particular जो scoped in services हैं, तो whether there is a separate
compliance function की ज़रूरत है, who is constantly इनको supervise compliance status check कर रहा है. In certain firms जहाँ पे extensive services उस तरह नहीं हो रही होंगी, तो maybe उस तरह का एक separate unit या dedicated resource या जिसको हम compliance officer का title दे सकते हैं, वो शायद required नहीं होगा. So these again linking with the risk assessment इनका है AML program का, और उसी basis पे AML risk assessment जो है वो would provide input to the development of the AML program. AML program in areas को cover करेगा, and that's the session based on the risk based approach होगा. So risk के हिसाब से ही AML program extensive या less extensive होगा. Importantly, it should be in writing, और review होता रहना चाहिए, update होना चाहिए, updated होना चाहिए. So for example, अगर एक firm है which is not providing a particular service, तो उस सिलसिले में शायद उसकी जो AML प्रोग्राम है वो उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा होगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब वो सर्विसेज प्रोवाइड शुरू करेगी तो उसका AML प्रोग्राम को अपडेट करके उन सर्विसेज से रिलेटेड पॉलिसीज प्रोसीजर्स को they have to bring in those policies and procedures. Then importantly, this program has to be communicated to the staff which is involved in provision of these services, and lastly, it is the responsibility of the senior management of the firm to ensure that AML risk assessment and AML programs are written, communicated, and updated periodically. So, AML की जो first steps हैं वो risk assessment and AML program है. AML program ही हमें फिर input provide करेगा for the next step, which is customer due diligence. So, in these slides, जो I will be explaining what is CDD, when it has to be done, किस पे करने की ज़रूरत होती है, CDD कब करने की ज़रूरत होगी, इसकी टाइमिंग क्या होगी, इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चंद स्लाइड्स हैं जो कि उस इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हैं. CDD is undertaken firstly for every client, beneficial owner of the client, or any representative who is acting on behalf of the client. इन तीनों की customer due diligence होना ज़रूरी है. So first ये तीन है जो कि in case of legal जो entity है तो उस context में उनके जो भी clients हैं as a natural person उनसे related ये steps होने चाहिए. CDD कब होनी चाहिए? Whenever we are establishing a business relationship, so every new client onboarding के वक्त CDD होनी चाहिए. When there is a significant change in the legal structure or ownership structure of the client, so उस वक्त भी होनी चाहिए, so that our CDD जो है वो updated हो जाए based on the new information. Whenever there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, then again we are required to conduct a CDD. And lastly, if there is a doubt about the veracity of the information that has been provided by the client, so at that point in time the CDD is required. So not only at onboarding की वक्त होती है ये होनी चाहिए, इस क्योंकि हमारी requirement framework ये है कि monitoring भी होनी चाहिए CDD की और clients की. So based on that monitoring, maybe we are required to conduct CDD of an existing client at a later stage in fact इसकी वजह से. Then timing of the CDD, में दो चीजें हैं. Ideally, it should be, and in most of the cases, it should be performed before establishing any business relationship. However, in certain cases, business relationship के दौरान भी की जा सकती है, लेकिन that would be an exception. और वो उस केस में होगी जहाँ पे the risk has been initially understood or assessed to be low. In case, for example, if there is a politically exposed person या NGO या NPO है तो उस सिलसिले में क्योंकि high risk होगा, which I will explain in the coming slides, so the CDD measures have to be completed before entering into business relationship. In case of low risk जहाँ पे है तो वहाँ पे can be जो information gathering and verification है done during the course of the business relationship. CDD involves जो इसमें areas हैं वो firstly obtaining information about the identity of the client, its beneficial owner और या जो भी इसके representatives हैं उनकी जो personal identification है, for example उनके name, उनकी residential addresses वगैरह वो information gather करना. Then getting information about the nature and purpose of the service. So what sort of service we are going to provide, and what is the
purpose for this particular service. So information about on these aspects. Then the verification of the data that's or information that has been provided about the identity of a client or its beneficial owner or etc. So that's also part of the CDD. उनकी verification is important. उस सिलसिले में जो भी available resources हैं plus जो online platforms या उनको use किया जा सकता है. Again CDD जैसे I explained earlier उसमें ongoing monitoring की भी ज़रूरत है and then there is a concept of screening. जो कि कमिंग स्लाइड पे एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो भी CDD का ही पार्ट है and has been explained in the AML framework. And importantly जो भी CDD की steps और जो verification जो भी डॉक्यूमेंट हैं they have to be retained और वो available होने चाहिए फर्म के पास as part of this any particular engagement. जो स्क्रीनिंग का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वैसे तो funds have to monitor. So in case monitoring ये है कि periodically assess किया जा सकता है या data को update किया जा सकता है about the customers जो information है identification वगैरह. लेकिन screening उस वक्त kick in होती है जब गवर्नमेंट पाकिस्तान यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या नेक्टा कोई भी लिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं या किसी भी इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कर देते हैं as under the respective laws. Designation या prescribe का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है under the Securities Council Act जो पाकिस्तान में 1948 है उसके तहत it's responsibility of Ministry of Foreign Affairs कि अगर UN Council किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी को डेजिग्नेट करती है ML या CFT या किसी और कॉन्टेक्स्ट में तो वो has to be designated by the respective member. So पाकिस्तान के मेंबर ऑफ यूएन है तो उसको पाकिस्तान के अंदर भी उसको लीगली इन्फोर्स करना होता है. उस सिलसिले में वो SRO इशू करते हैं. SRO इशू में हम इंस्टीट्यूट हैज बीन फ्रीक्वेंटली शेयरिंग दीज SROs क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हम इंस्टीट्यूट्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फॉर डिसमिनेशन टू इट्स मेंबर्स. तो इट्स बीन डन. सेकेंडली इंस्टीट्यूट हैज आल्सो रिटन टू ऑल द मेंबर्स. इस सिलसिले में जो प्लेटफॉर्म है एक डेटाबेस अवेलेबल है जहां पे लॉगिन करके अपडेटेड लिस्ट को भी देखा जा सकता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मेंटेन कर रहा है. सो वो एक प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है. तो उस सिलसिले में जब भी कोई SRO इशू होता है अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो इमीडिएटली यू आर रिक्वायर्ड टू एज अ प्रैक्टिसिंग फर्म अगर आप सर्विसेज ये दे रहे हैं तो जो स्कोप इन है AML और CFT के कॉन्टेक्स्ट में उस सिलसिले में यू हैव टू check your existing portfolio of clients, with reference to AML or CFT की services जो दे रहे हैं accountant and trust and company सब provider वो वाले client portfolio को उन SROs के साथ screen करना है to ensure कि कोई भी ऐसा client नहीं है जो कि उस तरह की जो prescribe किया गया हो. एंड सेकंड इसमें यह है कि कोई ऐसे भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो कि लिंक हो सकता है विद द प्रिस्क्राइब्ड डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स जो कि तो उनको भी स्क्रीन करना होता है. और उस सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास तो भी हमें रेडिली अवेलेबल फॉर एग्जांपल न्यूज़ आर्टिकल्स या जो उसमें हमें नजर आती है या रिसर्च उसकी बेसिस पे उसको स्क्रीन किया जा सकता है. लेकिन जो डेजिग्नेटेड और प्रिस्क्राइब्ड है उनको बेस्ड ऑन दी जो SROs हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्लेटफॉर्म है नेक्टा के notifications हैं and the firms can also use independent online जो portals होते हैं वो भी use कर सकती हैं to screen. लेकिन screening has to be immediately और accordingly in case की screening जो है results in true match या suspicion create करता है. True match is के exactly match कर जाता है कोई भी client किसी उससे या suspicion create करता है तो then the requirement under the law is to freeze the clients the funds available हैं आपके पास. For example आप as a बैंक अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं as a mean of service तो वो clients वो काम करना होगा. then reject or discontinue the client immediately without informing the client. Stop performing the services. Lodge STR with FMU को बताना होगा in the form of a suspicious transaction reporting and then notify the Ministry of Foreign Affairs as well as जो भी relevant दूसरी अगर ministry है अगर anti-terrorism act से related है तो then NECTA and Ministry of Foreign Affairs उनको notify inform करना होगा and also inform ICAP a certain individual has been
either a true match or a suspected money launderer terrorist financer. So this screening it has to be done importantly immediately whenever a new SRO or information is made available to the firm. Enhanced customer due diligence, अगर हम customer due diligence को types की बात करें तो there are broadly 3 types of customer due diligence जो आप देखेंगे. One is simplified, the other is standard, and the last one is enhanced. Simplified जो normally हम perform कर रहे होंगे, I think in my assessment या in general जो literature में हम पढ़ेंगे या देखते हैं तो वो standard due diligence होगी जो कि हमने पीछे discuss की है. पिछली slides पे verification, obtaining information, verification of that information as well as जो purpose and nature of the जो client का relationship है वो document करना. जो simplified है वो इससे भी lesser steps हो सकते हैं और वो उसमें ongoing monitoring भी relatively शायद कम हो सकती है. वो उस केस में है जहाँ पे वो entities जो कि खुद बहुत regulated है वो involved है या वो गवर्नमेंट को हम कोई सर्विसेज या गवर्नमेंट जो है वो एज अ क्लाइंट हमारे साथ डील कर रही है. सो वहाँ पे सिंप्लीफाइड भी हो सकती हैं. एंड लास्टली इनहैंस्ड अगेन द रिक्वायरमेंट इज कमिंग फ्रॉम द FATF रिकमेंडेशंस एंड FATF रिकमेंडेशंस के अंदर रिक्वायर्ड ये है और उसी तरह हमारे फ्रेमवर्क में भी रिक्वायर्ड है कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस. There's a concept of high risk jurisdictions, and in Pakistan context, जो पाकिस्तान की regime है AML की या national risk assessment या उसमें NGOs और NPOs को भी high risk category में डाला गया है. So any sort of relationship, business relationship with NGO or NPO would be a high risk और उसमें enhanced customer due diligence की जरूरत होगी. Politically exposed persons का जो concept की context ये है कि these are individuals जो कि government में whether in Pakistan or outside Pakistan फॉरेन कंट्रीज में पॉलिटिकल पोजीशंस पे रहे हैं या रहते हैं या तो उनके और उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स और एसोसिएट्स होते हैं उनके अगर हमें आइडेंटिफाई होता है कि एन इंडिविजुअल इज अ पैप या उसका क्लोज एसोसिएट या फैमिली मेंबर है, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो उस सिलसिले में वी हैव टू कंडक्ट एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस. इज अ मस्ट. Then high risk jurisdictions, FATF अपनी assessment में कुछ jurisdictions को high risk categorize करता है. So for example, अगर पाकिस्तान को further downgrade किया जाता है listing में तो maybe it could be categorized as a high risk country further. इसी तरह कुछ countries हैं जिनको sanction किया हुआ है जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं. So FATF ने उनसे किसी किस्म की business relationship को prohibit किया हुआ है. So high risk कंट्रीज जो है FATF ने अगर कोई रिकमेंड किए हैं, सजेस्ट आपने आउटलाइन किए हुए हैं या नेशनल फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है या ICAP बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट या AML सुपरवाइजर डेजिग्नेट करता है, तो उन कंट्रीज से रिलेटेड अगर कोई भी क्लाइंट है तो उस क्लाइंट के ऊपर भी हमें इनहैंस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी होगी. एंड एज आई एक्सप्लेन कि NPOs और NGOs के सिलसिले में भी when entering into a business relationship, enhanced customer due diligence. Enhanced customer due diligence में कई examples हो सकती हैं, लेकिन the important aspect is उसमें obtaining information on the source of funds and the source of wealth of the client. This is important कि ये हमें enhanced में करना होगा कि अगर वो कोई भी for example company corporation है तो सिलसिले में जो funding है उसकी क्या source है उसको हमें obtain और verify करना होगा. So this is an aspect. उसी तरह enhance में हमें ongoing monitoring शायद ज़्यादा करनी होगी, ये भी हो सकता है. Importantly, enhanced customer due diligence यहाँ होगी. For example, when there is a client is a PEP, वहाँ पे senior management is a must before entering into a business relationship. इसी तरह enhanced customer due diligence अगर require हो जाती है तो it has to be completed before entering into a business relationship. जैसे शुरू में मैंने बताया था कि timing कब होगी customer due diligence की. So enhanced customer due diligence भी है and it is important and in certain cases it's a must. And importantly again इसकी documentation maintain करना भी जरूरी है. Coming towards the reporting aspect, जो reporting का है, reporting में दो चीजें हैं जो AML Act के अंदर भी हैं और accordingly हमारे framework में के अंदर भी required है. One is the STR, suspicious transaction reporting, and the other one is the currency transaction reporting, CTR. STR
और CTR दोनों have to be filed with FMU Financial Monitoring Unit, और इनका एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है और वेबसाइट पे FMU की ऑनलाइन STR को सबमिट करना होता है। STR जो सबमिट करनी होती है वो फौरन करनी होती है। किस केस में करनी होती है? when we are sure of या when we are suspecting or reasonable grounds कि an individual or entity is involved in the money laundering. So उस केस में भी हमें STR करनी होगी, irrespective के whether we have 100% information. इसका मतलब यह है कि या substantial information. If we have a suspicion, then again we have to file STR. STR promptly करनी होगी, and in the law it has to be submitted within 7 days. So this is maximum time. अगर इससे lapse होता है तो then this would be a default. This could be a default on the firm, on the reporting firm. And again, importantly, de minimis यानी इसमें कोई materiality involved नहीं है. So before entering into a relationship, अगर उस वक्त भी हो जाता है, there is no transaction with the client, no dealing with the client, no service provision, तो उस केस में भी ये हो सकता है कि हमें STR को consider करना पड़े. CTR का जो concept है वो ये है कि currency transaction reports उस वक्त होती हैं जब एक threshold से ज़्यादा कि cash में transaction हम करते हैं while providing a service to the client. It does not involve our professional services. जो fees हैं उसकी fee के context में नहीं, लेकिन client के behalf पे when we enter into transaction या service जिसमें cash involved है, तो उसकी एक limit है. I think at present जो FMU ने prescribe की है limit of single transaction वो 2.5 million rupees है. So इससे ज़्यादा कोई currency में cash में transaction अगर हम करते हैं as a reporting firm on behalf of the client या for the client, तो वो CTR को attract करती है और उसमें फिर हमें CTR फाइल करनी होगी with the FMU. Important aspect दो हैं इसमें reporting context में, वो ये further दो concept हैं या कि एक तो इसमें confidentiality को override करता है AML Act, so have to be filed irrespective we have entered into a non-disclosure or confidentiality agreement or clauses. और सेकेंडली ये जो सिविल और क्रिमिनल जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है AML लॉ. इन केस के एन इंडिविजुअल और फर्म फाइल्स, so it's protected under the law. And important aspect is no tipping off. टिपिंग ऑफ का मतलब ये है कि क्लाइंट से इस सिलसिले में अगर शक होता है तो या यकीन भी होता है यानी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन द बिजनेस रिलेशनशिप हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. और फर्दर जो कोई भी ऐसी इंडिकेशन या कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए which can tip off the client, because tipping off is an offense, and any individual who can be considered to be involved in tipping off is would attract penal actions under the AML Act. So tipping off को रोकना है. So इसको अगर हम इस तरह देखें कि while entering into a business relationship, we suspect rather than getting further information, we should stop so that the client is not tipped off, and maybe we can consider filing the STR if required under जो हम अपनी assessment में consider करते हैं कि इसको फाइल करना जरूरी है. Lastly, जो AML Act का obligation of firms के इस context में चीज़ है वो है record keeping. Record keeping relatively straightforward है. इस तरह के जो CDD और इन चीज़ों की record keeping है उसकी एक लिमिट है, टाइम लिमिट, वो 5 years तक है under the AML Act. फिलहाल 5 years है. तो हमने AML framework के under accordingly for 5 years firms have to keep record, maintain record of the CDD. STR और CTR के सिलसिले में the requirement is to maintain this information with the firm for 10 years. And in case there is a matter which involves litigation या court involvement है तो उसमें accordingly unlimited period होगा till the time के court से जो भी वो है matter resolve हो जाता है. So this is the general जो timelines हैं, time periods हैं. Record has to be in sufficient detail. It can be in electronic or paper form. ये firm की अपनी policy decision हो सकता है, and it has to be made available to ICAP because ICAP would be acting as an AML supervisor. So for review purposes, it might require this information.
then under the law, the FMU or any other government agency जो कि investigation agency है can also require that the particular जो record है which is being maintained or has been maintained by the firm. So firm has to oblige while sharing any this record. Then this covers the जो previous slides थी वो जो AML obligations हैं of the firms उनको cover कर रही थी. अब on couple of slides briefly मैं explain कर दूंगा the AML supervisory framework. All this जो भी obligations of the firm है as we earlier discussed that ICAP is a AML supervisor या SRB self regulatory body की term use होती है FATF recommendations में. So ICAP is a SRB of its members, and those members who are practicing members, and amongst those who are providing accountant or trust and company service related जो services हैं वो दे रहे हैं. तो उनका जब SRB है तो जो regime पाकिस्तान में follow की जा रही है AML supervision की अगर थोड़ा सा मैं वो वैसे explain कर सकूँ ये है कि वो ज़्यादा linked है या link तो नहीं कहना चाहिए ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है यूके मॉडल को. यूके की जो AML regime है, यूके इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लायंट AML regime जो इस वक्त दुनिया में है. यूके की regime को इस तरह हम देखते हैं कि यूके में जैसे ICW या ACC है तो दो मेंबर्स जो कि इन बॉडीज के हैं तो ICW is SRB of its members. So similarly पाकिस्तान में ICAP is SRB of its members. वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है यूके में और रिक्वायरमेंट भी है कि जो AML SRB है उसका एक इंडिपेंडेंट AML सुपरवाइजर भी हो जिसका काम सिर्फ उसको मॉनिटर करना है उसकी AML regime को. ICAP के जो AML सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क या जो काम है उसको मॉनिटर करने की जरूरत है. तो उस सिलसिले में यूके में भी एक बॉडी है जो कि डिफरेंट प्रोफेशंस को सुपरवाइज कर रही है. सो ICW जो है वो उसको रिपोर्टेबल है. इसी तरह पाकिस्तान में जो जिसका इन्विजिट किया जा रहा है वो ये है कि SCCP has been designated as AML supervisor of ICAP. The important aspect is that we have ensured अभी तक framework में and our all discussions and correspondences with SCCP and the other consultants the AML supervisor's work is to monitor our work in ICAP's supervisory work and not of the reporting firms. So they would not be required to in any form coordinate or require information directly from the reporting firms. This is an important aspect जिसको हम ने अपने framework के अंदर भी cover किया है and this framework has been seen by or reviewed by the AML supervisor and various other consultants. So our linkage would be the AML supervisor, institute जो AML का supervisory board and the department, and then जो firms की linkage है वो हमारे in-house जो department होगा dedicated resources के साथ and the AML supervisory board के साथ होगी. So this is जो तीन इसमें layers हैं AML supervisor, ICAP's AML supervisory जो board and the department, and lastly the firms. जो firms से related obligation arise होती है as far as the framework is concerned वो ये है कि firms have to file a return form जो कि return A है and a separate return form B. Form A would be required from all firms. So for example, if there are 600 firms registered with ICAP, those firms are all firms registered with ICAP. So उनको form A submit करना होगा every year. The deadline is 30th of July. So by 30th of July every year, form A has to be submitted by all the firms. जैसे मसूद साहब ने शुरू में explain किया कि इस सिलसिले में एक वो develop किया जा रहा है portal भी. So online submission होगी, which would be I think very easier for the firms or hardly would take 5 to 10 minutes form A को submit करने में. फॉर्म ए की बेसिस पे अगर फर्म कोई भी दो क्वेश्चन है पर्टिकुलर कि अगर अकाउंटेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है या ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर की कर रही है, इफ इट हैज टिक्ड वन ऑफ दोस बोथ, so then it would be required to submit form B, and form B is extensive as it covers various aspects जो कि हमने framework के अंदर highlight किए हैं, so that firm can assess on its own कि उसकी AML compliance की क्या status है और एक तरह से उनको self assessment भी हो जाएगी और वो उसी को submit करेंगी, and then on the basis of that the institute would be conducting on-site reviews of firms to ensure कि जो हमारा supervisory regime है वो properly function कर रहा है. Form B की जो deadline है that's by 15th of August.
द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये थोड़ा सा है फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये ट्रांजिशनल ईयर है. वी इशू द फ्रेमवर्क इन February. सो February या मार्च में कोई भी फर्स्ट ऑफ मार्च फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ मार्च को कोई भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट है, तो जो AML की ऑब्लिगेशंस ऑन दैट एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट होगा, प्लस जो नए क्लाइंट्स हम ले रहे हैं, ऑनबोर्ड कर रहे हैं बिटवीन फ्रॉम 1st of मार्च टू 30th जून. फर्स्ट ईयर में ये दो सेट्स देखने होंगे हमें सेपरेटली, और इनकी सिलसिले में जो हमारा AML फ्रेमवर्क है या जो CDD और तमाम चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मेंटेन करनी होगी फॉर द फर्स्ट ईयर. गोइंग फॉरवर्ड जाहिर है जो ऑन बोर्ड हो रही होगी वो, प्लस जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उस सिलसिले में जो भी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग है वो होगी. Then जैसे I explained कि forms, all firms have to submit form A. Certain number of firms would be required to submit form B because those firms would be reporting firms as per their own assessment. Institute would conduct on-site reviews once information is provided by the firms, and institute would start conducting the reviews. उसका पूरा mechanism बताया गया है in the framework कि notice firm को पहले inform किया जाएगा, then जो भी उसका process है वो है. इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंगली जो जिस तरह हमारा अभी एक फ्रेमवर्क है QCR का, अगर थोड़ा सा एनालॉजी ड्रॉ करें तो उसी तरह एक फर्म की स्पेसिफिक रिपोर्ट इशू करेगा ऑन इट्स कंप्लायंस स्टेटस, एंड एज एन आउटकम ऑफ दिस रिपोर्ट further steps can be taken. Instructions can be issued by the institute which can involve further trainings, maybe another assessment AML related of the firm, and in certain cases maybe sanctioning or reprimanding the members. So ये journal जो AML का supervisory framework है, and lastly जो institute है would be coordinating with the AML supervisor, and it would be also submitting an independent report जो होगा AML supervisory board, वो AML supervisor को भी yearly basis पे submit करेगा on based on जो भी उसके अपने actions या performances हैं या जो भी steps carried out by the AML supervisory board during the year. तो ये जो क्विक एक है जो अब तक का हमारा फ्रेमवर्क है, उसमें जो मोस्टली I tried to highlight the obligations of the firms and the obligations of the firm in context of जो उनके client हैं, as well as obligations that are linked relevant to the ICAP's AML supervisory framework है, where they are required to submit certain forms and provide information during on framework. I think कि ये थोड़ा सा in the awareness session ये first coverage इस तरह हमने की है, and thank you. Now I think we can take questions and we can discuss various angles and aspects of the framework. Thank you. We have received 5 questions. So we can start with those before we take live questions. First question is from Mr. Arsalan. A certificate from CA is required for freight remittance as per SBP, whether this services is AML activity or not. जी सुहेल, आप क्वेश्चंस के आंसर अपनी अंडरस्टैंडिंग में करते जाएं, और अगर किसी क्वेश्चन का अभी हम क्लैरिफाई ना कर सकते हो तो वो नोट कर लें, एंड देन वी इंटेंड टू इशू FAQs, तो उसमें फिर इसको फर्दर देख लेंगे. तो सुहेल आप करें, और अगर नहीं हो कोई मैटर तो मैं भी चिप कर लूँगा. जी, on this my understanding is that, my personal understanding is that yes, इस सिलसिले में अगर हम client की money को repatriation कर रहे हैं and we are handling the client funds in a capacity as a service provider, तो yes can affect AML की जो framework requirements हैं, यानी as a accountant अगर हम definition को देखें, explanation को देखें, in my personal view yes. Okay, second question is with respect to the scope of services included within the AML framework. Would appreciate if you could clarify for the larger audience whether advisory services in connection with the defined in scope activities would fall within the purview of the AML framework, that is, where the firm is not actually carrying out the transaction for the client, but is only advising on a particular aspect related to the transaction.
I think again थोड़ा सा पहले explain कर दूँ. These views would be my personal views, तो not of the institute. उस तरह जहाँ तक advisory services हैं, so for example जहाँ हम acquisitions या उस तरह की कोई services दे रहे हैं जो कि fall करती हैं under the AML regime, तो again depend करेगा on our particular role. Outrightly शायद उसको इस तरह कहना कि within the scope है या outside the scope है थोड़ा सा मुश्किल होगा. I think it would depend on the particular role that we are playing while carrying out that service. Another question is, we are of the view while going through the framework that bookkeeping services does not fall under the ambit of AML. जी, bookkeeping services नहीं है. However, bookkeeping plus, for example, bank account management है, payroll services हैं, तो then they would be under the framework. Another question, whether receiving funds to disperse payroll to client employees under client authorization will fall under the ambit of reportable service. Yes, would fall because clients के money को हम handle कर रहे हैं. Maybe risk कम हो, maybe based on the assessment, लेकिन within the scope of the framework होगा. Acha. Next question, would be helpful for the members if the institute could provide some guidance on identification of beneficial owners, verification of identity of such persons using relevant information or data obtained from reliable independent resources. जी बिल्कुल. I think one of the most challenging aspects जो how I see this entire framework है, अगर firms के context में देखें तो beneficial ownership का होगा या हो सकता है. Very rightly pointed out कि इस सिलसिले में guidance होनी चाहिए and we would be working on that. Importantly थोड़ा सा aspect highlight करने का ये भी है कि in पाकिस्तान जो beneficial ownership का अभी तक focused on this particular area जो regime is relatively weak. SECP is working on it because SECP is a corporate जो भी body है या institute है, उस regulator वो इस पे काम कर रहा है because it could be coming out from the AML Act, under the SECP का जो Companies Act है उसके तहत आ रहा होगा. There is a need to develop an beneficial ownership register जो इसी यानी बाकी ममालिक में भी इसी कॉन्टेक्स्ट में काम हो रहा है, कुछ कर चुके हैं लेकिन ज़्यादातर ममालिक में भी अभी काम हो रहा है. So this is the concept. जहाँ तक beneficial ownership का ताल्लुक है कि verification या उसकी identification rightly pointed out would be challenging और उस सिलसिले में we would be issuing जो guidance है जिसमें हम कुछ steps बता सकते हैं कि किस हद तक क्या काम करना है so that a general जो understanding है वो develop हो जाए. Acha, another question. Reporting firms means members in practice involved in providing certain services. Annual form return filing to ICAP on firm basis or individual partner basis? This is on firm basis. It's not individual partner basis. Whether corporate services shall also fall in the scope? Corporate services को जो मैं मतलब ले रहा हूँ वो ये है कि for example registration of an organization with the SECP as an example, company incorporation से related जो services हैं तो अगर it's an example of corporate services to my understanding, yes, these fall under the trust and company service provider की जो list of services. Yes. Asha, then there's this thing. It would be helpful if FAQs can be issued by ICAP. Yes, we will be. The purpose of asking you questions is to develop the FAQs. Next questions. Customer due diligence and enhanced due diligence. Requirements are applicable for all existing clients within scope service or all client within scope services. In case of reporting firms. जी, for all existing clients की के ऊपर होंगी and existing clients की अगर हम definite explanation में कर सकूं तो existing clients वो होंगे which were with the firm on the date when this framework was issued. So on 29th of February
2020 पे जब फ्रेमवर्क विजन इशू किया गया और इन्फोर्स किया गया फ्रॉम ICAP's एंड, सो उस दिन का जो पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स है व्हिच इज विद इन स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि जिनको ये सर्विसेज दी जा रही है, दोज वुड बी द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। तो उनके ऊपर अप्लाई होगा एंड सब्सिक्वेंटली जो भी नया क्लाइंट ऑन बोर्ड किया जा रहा होगा उस पर अप्लाई होगा। Acha, another one is mentioned in the framework that practicing firm is not subject to AML framework. Can you please give examples as to what kind of services you expect for the firms to be only practicing firms and not reporting firms? जी, practicing firms, for example, audit की service, audit की services यानी एक बहुत ही common service है जो कि firm दे रही होती है. So those अगर सिर्फ for example XYZ is a firm और वो सिर्फ audit services दे रही है एक particular period के अंदर या tax services दे रही है, तो those would not be under the AML framework. And so एक example हो सकती है. However, if the same firm in the next year is providing audit plus accountant, for example, ये client की payroll को handle कर रही है, यानी transactions को या client के assets को handle कर रही है या company को operation में involved है, तो फिर वो scope in हो जाएगी. Then that would be that same firm which was not a reporting firm in the last year would be reporting firm in that particular year, the coming year. Under what circumstances ICAP can refer case to FMU? जी, ICAP जो रेफर कर सकता है केस, क्योंकि ICAP has to act as a SRB और the role of SRB is to ensure in this overall regime को अगर हम conceptually देखें तो ensure कि पाकिस्तान has an effective not only structurally but implementation side पे भी framework and regime AML की. So ICAP can refer to a case जहाँ पे ICAP suspects के कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या वो एस्पेक्ट है किसी भी क्लाइंट का ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, या ICAP के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो इस पॉइंट को ट्रिगर करती है. सो इन दैट इन दोस पर्टिकुलर केसेस जो है ICAP वुड बी रिक्वायर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद FMU. Acha, I would request you all can raise your hand so I can pass you all the mic so you can ask the question live. We have the option of getting you to participate live in this thing. So you don't just need to type. So आप लोग सारा पहले जो questions आए हुए हैं उनको take up कर लें. There are two more questions. One, if a client is being referred by network firm, can we reply on CDD or EDD done by network member firm being the existing client? जी, जहाँ तक थोड़ा इस पर भरोसा भी ऐड करेंगे. माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर नेटवर्क फर्म ने रेफर किया क्लाइंट, तो क्लाइंट की जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या कोई भी रिक्वायरमेंट है हैज टू बी कंप्लीटेड एंड इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी जिसका वो क्लाइंट है. सो फॉर एग्जांपल इफ अ क्लाइंट हैज बीन रेफर्ड बाय अ फर्म व्हिच इज इन लेट्स से इन कनाडा, जो हमारी नेटवर्क फर्म है उसने रेफर किया है, लेकिन इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी यानी पाकिस्तान फर्म्स रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर कि सीडीडी और हुई है, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो मेड अवेलेबल टू द फर्म है whenever required. So it's our primary responsibility. However, if the other firm has carried out the due diligence, we can use their data or information. Lekin the onus or the responsibility would remain with the firm whose client who is onboarding that particular client. That is correct. That is correct, Sohail. Another question, is the filing of forms returns under Companies Act 2017 come under ambit of the services to be reported? Sorry, can you please repeat? Filing of forms. For filing of forms under the Companies Act, does it fall under the ambit of the services to be reported? Honestly, I need to check this. ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट मुझे यानी SECP से चेक करना होगा कि किस हद तक है. इनकॉर्पोरेशन की हद तक तो है. I'm not very sure on this. Maybe it's not within the scope, but I'm not very sure. I can get back to this particular question. जी, यही है कि फॉर्म 29 या और कोई ऐसे फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं वो तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए हैं तो फिर आपके लिए वो इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड
services provided. There are many forms, तो एक एंड ब्लॉक ये कहना कि ये सारे फॉर्म्स के लिए नहीं होगा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली फर्दर देखना होगा इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन, बट द जनरल अंडरस्टैंडिंग इज कि जो नॉर्मल फॉर्म सबमिट हो रहे होते हैं उनके लिए नहीं होगा, लेकिन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के लिए इन पर्टिकुलर होगा. Acha, another question. If a firm carries out CDD in good faith and is not able to identify a high-risk client, what are the consequences for the firm? Will ICAP be issuing checklists to assist SMPs? जी, I think दो parts हैं इस question के. One is whether ICAP would be issuing a checklist या guidance material. तो yes, ICAP plans to issue जो particular CDD से related कुछ checklist या template हो सकती है जो कि guidance के तौर पे use की जा सकती है. And the second aspect is कि अगर firm in good faith has done the CDD but unfortunately has not been able to identify a particular client as a high risk client or जो भी उससे related risks हैं, again ये subjective matter होगा, would be determined या assessed by the individuals who are performing the site review या जो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे. In my personal view, अगर documented है all the process, all the steps, all the processes and is supported by adequate documentation जो है, so I think it can indicate the steps of the action the procedures have been complied with and have been done in the good faith. So again ये depend करेगा on a particular जो भी case to case basis पे. The general approach is के has to be documented and has to be supported by जो भी relevant, for example verification documents हैं या identification documents हैं वगैरह वगैरह. Acha, one question. By when is Form A to be submitted? The Form A has to be submitted by all firms registered with ICAP, irrespective के उनकी QCR है या नहीं है. All firms registered with ICAP. And to my understanding, जो data है वो शायद 600 plus firms हैं which are registered with ICAP. So those firms would be required to submit Form A by 30th of July. So और उसमें जैसे उन्होंने explain करने की transition जो clients हैं वो भी existing clients और onboarding clients till जून तक के जो client हैं वो सारे 30th July तक form में submit करना है on the basis of that information and by 15th of August है form B submit करना है for this year as and in the subsequent years. So it's an annual exercise और इस सिलसिले में ICAP is in the process of developing a portal both for forms A and Form B. और वो फिर जब ऑनलाइन होगा तो firms can directly submit जो information है through that portal rather than submitting in Excel or any other form. Acha ji, I'm taking a live question from Crow Pakistan. I'm giving them the mic. Ji, जी क्रो पाकिस्तान से प्लीज आप बताइए. आवाज बहुत हल्की आ रही है. जी जो भी बोल रहा हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दे. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी वालेकुम अस्सलाम. जी फरहीन, दिस इज नासिर मुनीर फ्रॉम क्रो पाकिस्तान. So first of all, thank you very much for arranging this session. सोहेल साहब बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दी है, वेरी इंफॉर्मेटिव. अच्छा, इसमें मैंने अभी क्वेश्चंस में भी आपसे किया था, मेरी एक सजेशन थी आईकैप से कि देखें फॉर टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अमंग द फर्म्स, अगर इसमें रिस्क असेसमेंट्स और ड्यू डिलिजेंस एंड एनहांस ड्यू डिलिजेंस वाला जो पार्ट है, अगर उसमें हम कोई रेफरेंस मटेरियल डेवलप कर सकें जितना जल्दी पॉसिबल होए, तो आई थिंक वो ओवरऑल प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होएगा. क्योंकि इफ वी रिकॉल जब ये ISQC1 वगैरह आया था तो उसके बाद आईकैप ने कुछ प्रैक्टिस मैनुअल्स निकाले, फ्रेमवर्क्स निकाले, फॉर्म्स निकाले, तो फॉर्म्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थे.
इसमें फर्दर आई एम नॉट अवेयर कि किस लेवल पे काम हो रहा है। आपने मेंशन किया कि कंसल्टेंट्स के साथ आईकैप मिलके काम कर रहा है और उसमें मल्टीपल मीटिंग्स हो रही हैं। तो इसमें एक सजेशन ये भी हो सकती है कि अगर कोई किसी फर्म के पास एक्सपर्टीज है और वो वॉलंटियर करना चाहे इस प्रोसेस में, इस फ्रेमवर्क को डेवलप, नॉट फ्रेमवर्क, ये जो हम रेफरेंस मटेरियल की बात करें उसको डेवलप करने में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए इस कमेटी में, तो उस ऑप्शन को भी देखा जा सकता है। जी थैंक यू सब। इसमें बिल्कुल आपने जिस तरह कहा, तो आईकैप जो है अपने पे एसआरबी, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ, उसका रोल भी एक ये है कि उसने गाइडेंस इंश्योर करनी है। ये अंडर फैटफ रिकमेंडेशंस भी है और वैसे भी आईकैप की एज इंस्टीट्यूट की रिस्पांसिबिलिटी है। सो आईकैप हैज प्रीवियसली इशूड अ गाइडेंस जो कि अवेलेबल है ऑन AML से रिलेटेड जो अकाउंटेंट्स की रिस्पांसिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस हैं उसमें FAQ फॉर्म में। लेकिन जो स्पेसिफिकली जिन एरियाज का आपने जिक्र किया, रिस्क असेसमेंट या CDD एंड एनहांस CDD, इस सिलसिले में भी आईकैप वुड बी डेवलपिंग अ गाइडेंस एंड इशूइंग सेम फॉर मेंबर्स जो फैसिलिटेशन। Acha ji, we have some other questions. As the first reporting will be due in July, when we can expect the guidance and forms from ICAP, especially with regards to CDD? Okay, I think we can expect the earliest by end of this month, यानी ये by maximum जो अगर मैं देश को देखता हूँ तो in the early part of the next month. So we are we will be working on that, and as Masood sir mentioned, separate dedicated resources are being coming on board for AML department. So those resources would be aggressively working on this aspect, or we would be issuing maximum by mid of June. However, having said that, I think जो general guidance या हो सकती है, SCCP ने भी अपने regulations issue किए हैं AML के ऊपर, जो उनकी reporting entities से related है। इसी तरह SPP ने अपने financial institutions के लिए किए हुए हैं। वो कुछ चीज़ें अपनी NFGs में list out करते हैं in terms of customer due diligence, so those can also be considered by the firms in the file जो हो रहा है। इसमें यानी general जो यही है कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ऑफ द क्लाइंट, ऑफ दैट नेचुरल पर्सन, एंड देन उसके बाद उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप के साथ ही लास्टली जो है उनकी वेरिफिकेशन फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट रिसोर्स की होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल NIC का जो रिकॉर्ड है वो, या ट्रांसपोर्ट की कॉपी, या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैकेनिज्म होगा। तो उस सिलसिले में टिल आईकैप material is issued, firms can also refer to the SCCP regulations, which contain certain information in this particular area, as well as SPP regulations. Okay, another question is, what does it mean by incorporation of company? Normally, all forms documents are submitted through IDs of the sponsors. Firm only fills up these documents. सायरा, आप एक सेकंड रुकेंगी? जी। ये जहाँ तक इंटेंशन के वो डेवलप होती रहे और वो इशू होती रहेंगी। कुछ जो है वो प्री सबमिशन ऑफ दीज डेडलाइंस होगी, और हो सकता है कुछ जो है वो उनका ये कंटिन्यूस फेज है और उसमें इंटेंडेड है। कोई एक पर्टिकुलर डेट इस वक्त शायद नहीं बताई जा सके कि जी इस दिन या इस वीक में वो हो सके, क्योंकि इसके ऊपर एक कंटिन्यूस काम होगा। क्योंकि FATF की रिकमेंडेशन है, अगर आप FATF की जाके रिकमेंडेशन की साइट पे देखेंगे तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा गाइडेंस मटेरियल भी जो है वो इशू किया हुआ है, और डॉक्यूमेंट मौजूद है दैट कैन बी रेफर्ड। वो सारा भी हम अपने AML पेज के ऊपर लिंक भी बना लेंगे, वहाँ भी पोस्ट कर लेंगे। अपनी जो गाइडेंस है वो भी डेवलप कर लेंगे,
But what we all need to recognize and understand is कि अब ये framework is in place है और इसको हमें respective guidelines के साथ जो है वो submit भी करना है. जो हम सबमिट कर रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन है जो कि फर्म ने अपने स्टैंडर्ड में कैरी आउट की है, जो पर्टिकुलरली फॉर्म बी है. फॉर्म बी में शायद कुछ इन्हेंसमेंट हो और वेरी सून उसकी एक रिवाइज्ड वर्जन जो है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बीइंग एडवाइज्ड टू अस फ्रॉम FMU, SCCP एंड बेस्ड ऑन देयर कंसल्टेंट रिव्यू. My request to all firms is to please do take into account the requirements and we continue to follow. अगर कोई specific question आता रहे तो वो आप institute को जरूर भेजते रहें और as best as we can from the institute side उसकी clarification. Acha, we have 2 more questions. One is definition of accountant includes buying and selling business entities. Is it transaction advisory services we render to our clients for company acquisition? Yes. Acha, next question. Whether ICAP will issue list of high-risk clients, person, companies in Pakistan, because currently SMPs have limited resources to assess whether client is high risk or low risk. जी, इस सिलसिले में हमारे किसी को इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कहीं पे नहीं उस तरह किया जाता. यानी फॉर एग्जांपल अगर यूके की रिजीम है तो वहाँ पे या किसी भी और मुल्क की न्यूजीलैंड या कनाडा जो हाई रिस्क के इंडिकेटर्स बताए जाते हैं. सो हाई रिस्क का इंडिकेटर ये हो सकता है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंटिटी का, यानी एक बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर हो रहा है हो रही है फर्म, लेकिन जो एंटिटी है उसकी एक स्ट्रक्चर ओवरऑल लीगल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में है. सो इट कैन बी इंडिकेटर ऑफ हाई रिस्क. सो जैसे किसी को पर्टिकुलरली डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता अनलेस कि वो जैसे मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या नेक्टा वगैरह करते हैं बेस्ड ऑन द UN या पाकिस्तान की जो एंटी टेररिज्म के जो कवानीन है उनके तहत. अदरवाइज किसी को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता. और जो है वो उसमें गाइडेंस या इंडिकेटर्स या रेड फ्लैग्स जिसे हम कहते हैं या FATF कहता है वो शेयर कर सकता है या वो रेडिली अवेलेबल भी है. जैसे फरूख साहब ने कहा कि बहुत सारे मटेरियल FATF ने ऑलरेडी गाइडेंसेस इशू की हुई है. We can upload those on our web link और उन्हीं को यूज करते हुए an individual or a firm has to assess and develop जो risk categorization है of a particular client. Acha, Kashif Sehgal Saab has a question. I have given him the mic. Ji, Kashif Saab. Ji. Assalamu alaikum. My question is, in terms of customer due diligence, since I represent SMP, so does it have to be carried out for every single client regardless of their paid up capital or their worth? So this is my question. Does it have to be carried out for every single client? And it might not be possible in such a short span of time because normally SMPs have got a lot of clients with very low fee and short time frame. Irrespective of the size, the customer due diligence has to be carried out. The customer due diligence has to be carried out as far as the AML framework is concerned, only of those clients to which we are providing the services which are listed as the accountant or trust and service company providing. So not of all the portfolio of particular firm, लेकिन वो limited portfolio जो के जिनको ये services दी जा रही हैं उनकी customer due diligence is a must, irrespective of the size of the client. Gee, does anybody have any more questions?
Asha, there's another question. With respect to fee charged to client, cost of assessment of client will be too high. In absence of lists, it's practically impossible to identify risks. Sorry, दोबारा करती repeat question. Sorry. With respect to fee charged to client, cost of assessment of client will be too high. In absence of list, it's practically impossible to identify risks. जी, yes, जहाँ तक cost का factor है, in the beginning यानी जब भी कोई नई requirement होती है, तो that is the factor. लेकिन overall अगर हम इसको देखें तो इसका जो framework की requirement है या जो overall regime है पाकिस्तान की, वो भी उसकी भी एक cost है. For example, अगर we are non-compliant to FATF recommendations at the country level, जो इससे पहले भी डिबेट होती रही या हम देखते रहे, it has also a cost, and that cost would have to be borne by all the stakeholders. So I think कई aspects हैं इसको देखने के. So yes, in the first year it's understandable that the cost could be involved. However, going forward, I think शायद उस तरह की cost उतनी expensive नहीं involved होंगी, and it would be similar to जो normal हमारा routine activities हैं, उस तरह का एक process setup होगा. Again, जो assessment है, another factor is कि वो risk based approach है किसी भी AML regime की, तो firms को भी risk based approach को देखते हुए अपने risk के मुताबिक और level of services और size के मुताबिक ही अपने program और requirements को और infrastructure को develop करने की ज़रूरत होगी. So I think there is a flexibility का element भी है. Again, the cost aspect का एक दूसरा angle भी है देखने का. जहाँ तक list of जो रेफर की जा रही है, I understand कि शायद list of clients या कुछ उसको रेफर किया जा रहा है of high risk जो भी हैं. So high risk की general indicators हो सकते हैं, high risk के कुछ jurisdictions हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैं इसको अगर analogy draw करूँ तो we have been involved in doing audits. तो audits के अंदर हर firm की जो हर client की अपनी एक risk assessment या उसकी एक अपना risk होता है, and on the basis of that risk assessment procedures are performed. So similarly, कोई एक उस तरह का list down करना या prescribe करना would not be possible, and इसका कोई precedent भी नहीं है to my understanding किसी और jurisdiction में. However, again for guidance purposes, different indicators जो हैं वो जो red flags हैं या जो भी matters जो pertinent होते हैं वो consideration वो highlight किए जा सकते हैं और readily available भी हैं, तो उन्हीं को use किया जाता है और यहाँ पे भी उन्हीं को use करने की ज़रूरत होगी. However, इस सिलसिले में अगर किसी का भी कोई भी concern या question हो on a particular matter, so that can be raised separately with institute. Achha, there's a question, guidance on sources that can be used for screening of clients. Screening of clients का मतलब ये है कि जब भी पाकिस्तान में किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी को प्रिस्क्राइब या डेजिग्नेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शायद नाम फोर्स शेड्यूल का अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट, या जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्रिस्क्राइब करती है फॉर एग्जांपल अल-कायदा से रिलेटेड या उन चीज़ों को, तो उस सिलसिले में जो स्क्रीनिंग है उसकी बहुत सारी अवेलेबल है रिसोर्सेज. उस सिलसिले में ICAP थ्रू ईमेल भी शेयर करता है इंफॉर्मेशन. जब भी ICAP को इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सो ICAP शेयर्स दैट. ICAP ने इससे पहले ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो प्लेटफॉर्म है डेवलप किया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जो कि डेटाबेस जिसमें अपडेटेड रहता है और रेडीली एक्सेसिबल है, उसका भी लिंक शेयर किया है, एंड फंड्स can get themselves registered there on that platform. So that's another way. इसका UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से रिलेटेड डेटाबेस है वो UN की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, so that can also be used. Lastly, firms can also जो है वो इंडिपेंडेंट जो ऑनलाइन वेरियस रिसोर्सेज होती हैं या सर्विसेज होती हैं क्लाइंट चेक और उनकी जो हिस्टोरिकल या फैमिली ट्री या जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी यूज कर सकती है. So I think again इसमें भी flexibility है.
डिपेंडिंग ऑन दी जो भी फंड का स्ट्रक्चर है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या नीड है, वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकती है फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। सारा हमें क्लोज करना होगा। There's just this one last question. Again, it's like we have spoken about it. ICAP must identify high-risk business sectors and nature of transactions with materiality to mitigate the risks. जी, इस सिलसिले में अगेन जो नेशनल रिस्क असेसमेंट है, दैट्स फर्स्ट जो स्टेप है किसी भी फर्म को देखने के लिए जब वो अपना रिस्क असेसमेंट डेवलप कर रही होगी। सो नेशनल रिस्क असेसमेंट में कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि हाई रिस्क होंगे। सो फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट सेक्टर में भी मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर पाकिस्तान में नेशनल रिस्क असेसमेंट ये कह रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर और से इन्वॉल्व लोग जो हैं बिजनेसेस कैन बी कैटेगराइज्ड हाई रिस्क, सो दैट कैन बी यूज्ड बाय द फर्म्स एज एन इंडिकेटर। इसी तरह बहुत सारा और मटेरियल अवेलेबल है व्हिच कैन इंडिकेट कि ये वाले फैक्टर्स हो तो it can be the risk can be assessed as high. So इन चीज़ों को यूज करते हुए असेसमेंट की जा सकती है। एंड ICAP जैसे जिक्र हो रहा था would also be issuing its own independent जो भी इस सिलसिले में गाइडेंस है, लेकिन अभी भी FATF की तरफ से भी और बहुत सारी jurisdictions में ये मटेरियल पहले से अवेलेबल है, can be used. Farooq Right. Saab, I would now request you to round up and close the session. Thank you, Saira. I think जी, आई थिंक आज का ये सेशन था। अनफॉर्चुनेटली हमें एक ये दूसरी मीटिंग के लिए थोड़ी देर में कनेक्ट होना होगा, इसलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्योंकि इट इज़ न्यू फॉर प्रॉब्ली फॉर मैनी सेक्टर्स इन पाकिस्तान, इट्स न्यू फॉर देम, न्यू फॉर अस एंड न्यू फॉर द फर्म। वी ऑल विल लर्न टुगेदर इंशाल्लाह। इंस्टीट्यूट जो है वो अपने पार्ट के ऊपर आपने देखा है कि इसकी गाइडेंस भी इशू की है, ये फ्रेमवर्क भी डेवलप किया है, फर्दर भी गाइडेंसेस इंशाल्लाह इशू होंगी इसके बारे में। जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर हम सब के लिए जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, अपनी जो कंप्लायंस एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करें। आज का जो पर्पस था वो एक वाइडर सेमिनार नहीं किया, और क्योंकि ये डेजिग्नेटेड पर्सन्स जो नाम आ चुके हुए थे उनके साथ ये इंटरेक्ट हुआ है, एंड इट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग के दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी फर्म्स के रिस्पेक्टिव फर्म्स के अंदर इस एरिया को देख रहा है, एड्रेस कर रहा है। आई एम श्योर आफ्टर दिस सेमिनार, दिस वेबिनार अपनी फर्म में भी वो इस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करेंगे। Going forward, we look forward to having further comments, questions from you that will help us developing the FAQs which the institute intends to issue for the benefit of all. And with that, let me thanks Sohail, Saira, and Masood Saab for giving their perspective of this whole सब्जेक्ट। ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो सायरा ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो वेब पेज के ऊपर आ जाएगी, और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू हैव दिस डिस्कशन। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Thank you everyone. Thank you. Thank you.